नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पीएमसी में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ आनंद करुणेश जी सर आए हैं। सर एक वर्ल्ड फेमस बुक के ऑथर हैं, A Thousand Seeds of Joy, Teachings of Lakshmi and Saraswati जी। ये पुस्तक के माध्यम से सर ने स्त्री शक्ति को इस धरती पे कैसे स्थापित कर सकते हैं और सरल ही भाषा में हमारे बहुत सारी गलतफहमी और अंधविश्वासों का ट्रांसफॉर्मेशन बताया है। थैंक यू वेरी मच सर। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आज आप हमारे साथ आए और हमारे साथ मुखामुखी कर रहे हैं। तो इस पुस्तक के बारे में शुरू करने के पहले सर हम आपके आध्यात्मिक प्रयाण के बारे में जानना चाहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी। पहले तो मेरा सौभाग्य है यहाँ पे आना, पत्री जी इनवाइटेड मी है, बहुत खुशी का दिन है। So ये जर्नी दिस began about 2007 2007 में। फिर 2007 में तो मेरी बात होने लगी लक्ष्मी जी से, और 2009 में आइडिया आया किताब का। We were getting so many divine messages, इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, so it naturally grew the idea. फिर 2012 में was a big event, my father passed away. तो 2012 तक I received this through a collaborator. उसके बाद my own channel opened, and then for the last 5 years I've been receiving messages. And मेरा ऐसा नहीं कि this was the first introduction to spirituality. 17 साल से meditation कर रहा हूँ, when I turned 17. And मेरा जो बचपन था was very different. And I realized only when I turned 17 what I suddenly lost. So my childhood was very, how should I say, very divine. I used to have these blissful moments, एकदम खुशी में, जैसे used to become one with nature naturally. So I thought everybody else also experiences this, because as a kid you don't know. सबको ऐसा अनुभव होता होगा कि that's why हमेशा बाहर जाना पहाड़ों पे या कहीं पर नेचर में, that was my big joy, and I would feel sensations and joy. And all that I lost at 17, there was a particular process that happened. It's like a crucifixion. It was like 9 months long mental process, and I lost, every shred of happiness. It was like a crucifixion. So that's how I entered spirituality. तब से ये any kind of philosophical book, psychological book, धार्मिक किताबें, every Gita, Quran, to look for a solution. कि what am I going through? And then I found a Zen book, The Sound of the One Head. And in that book, a transformation happened. Not that I was new to spirituality. I've read many books, many masters. But when this process started in 2007, 2009, it really, the first conversation that I had with Lakshmi, it was half an hour conversation. I knew in that half an hour that my whole life I'll be working with her. It was such a profound, deeply intimate and close message that I knew in that instant that I'd worked with her in previous lifetimes, and so that was going to be my life path. And then the wisdom that has come, it's similar in some ways to all the spiritual paths here, but at the same time, many people are experiencing it's the spiritual wisdom of the time. ये आज की जो आज की स्थिति है, कलयुग is ending, और जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जिस टाइम से हम निकल रहे हैं, उसके लिए ये किताब है, with very profound messages about the divine feminine. दिव्य नारित्व के ऊपर है. दिव्य नारित्व, दिव्य and नारित्व is femininity. Or it's different from the regular feminism. This is divine feminine. So that's what the book is about. Thank you, sir. Sir, can you shed some light on ये दिव्य नारित्व? So दिव्य नारित्व में क्या है कि नारित्व का मतलब है कि जो पुरुषत्व और नारित्व शक्तियाँ होती हैं, they are like a polarity, yin or yang, masculine, feminine.
So in these two energies when they play, इनका जब एक तरह से डांस होता है एनर्जीज का, तो योग युग आते हैं, तो कुछ युगों में पुरुषत्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और कुछ युगों में नारीत्व आ जाता है। तो जब अपन गिरना शुरू होते हैं सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग, एक गिरने का टाइम होता है जब पुरुषत्व शक्ति बढ़ती जाती है, जब उठने का टाइम होता है वापस, तो फिर वापस नारित्व शक्ति का जागरण होता है। और ये इसको दिव्य नारित्व इसलिए बोलते हैं कि भाई ये वापस अपने को ऊंचाई पे ले जा रही है, दिव्यता पे ले जा रही है, तो दिव्य नारित्व। ये भी एक नारित्व होता है कि भाई नारियां आगे बढ़े, नारित्व फेमिनिज्म होता है। बट वो ये भी हो सकता है कि दिव्य ना हो, उसमें खाली फाइटिंग की एनर्जी हो, उसमें खाली कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमें कैसे भी करके, और वो पुरुषों के अगेंस्ट भी हो सकती है because you are trying to fight. So that is not divine feminism. That is more like wounded feminism. तो थोड़ा थोड़ा जो फेमिनिज्म होता था from 60s 70s, it was good. The women needed to fight back. मगर अगर एक्सट्रीम पे ले जाएंगे उसको, तो क्या होगा कि there are a lot of feminists who feel like they're against men. तो फिर वो प्यार का रहा, where is the joy, where is the love? So that is the alternative. Goddesses are showing how to be powerful. कैसे अपनी शक्ति रखो और प्यार भी रखो, खुशी भी रखो, शक्ति भी रखो। ऐसा नहीं कि हमेशा टेंशन में हर चीज के लिए लड़ना है, तो उस तरह का नारी दिव्य नारी। और ये एक डिवाइन बैलेंस भी है इन दोनों शक्तियों के बीच में, पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति के बीच में। सर, आपने बोला कि आपने चैनलिंग का प्रोसेस शुरू किया, ये आपके साथ बातचीत के माध्यम से आपके ये बहुत सारे संदेश मिले। इस प्रोसेस के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। तो चैनलिंग कई तरह से होती है। कुछ लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, उनको दिखता है। कुछ लोग क्लेयरऑडियंट होते हैं, उनको सुनाई देता है। कुछ लोग क्लेयरसेंटिएंट होते हैं, जैसे मेरे में क्लेयरसेंटिएंट है, तो उनको महसूस होता है। तो मेरे को एनर्जी महसूस होती है, कोई भी बोल सकता है मुझे भी एनर्जी महसूस होती है, तो उसका हाउ डू यू नो कि एनर्जी महसूस होती है? इट हैज टू बी अ फुल बॉडी सोल एक्सपीरियंस। खाली दिमाग में नहीं लगता कि ऐसा ये विचार आया, आपके शरीर में खुशी, लाफ्टर अनुभव होने लगते हैं, एंड योर सोल फील होता है। दैट्स व्हेन यू नो, ओ माय गॉड, दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम चैट। इनिशियली जब ऐसा होता है तो लगता है कि जैसे क्या ये मैं तो नहीं बोल रहा था, but slowly as you surrender you know the mind's voice, the ego mind's voice, and you know the divine, जो भी आपकी divine feminine or whatever voice is coming, you know that voice, you recognize that voice, and that's how then you know, that's how it happened through clairsentience. But that began in 2012. उसके पहले 2009 से 12 जो messages आए, that was with my collaborator, and she is Jade Devi, and she is mentioned in the book in the preface. So that is where the first half an hour had happened, where I was completely blown away. क्या message आया था कि now I'm gonna, it was so powerful, and I'm a very analytical person. ऐसा नहीं कि मैं किसने कुछ बोल दिया और मैं बोलने में आ गया. It was very deep, very wise, very personal, very intimate. And I knew in that moment my life was going to be dedicated to goddesses. It was like moving my life path. So it was a great gift in that beginning. उसके बाद से it's been just a journey, and then we've had even more goddesses. इसके बाद कई देवियाँ आई हैं. So not only Lakshmi ji like Saraswati ji को, फिर उसके बाद आई मदर, फिर पार्वती जी आई, फिर मदमेरी, फिर Bridget, Celtic goddess Bridget, then Mother Gaia, Prithvi माँ, और अब फ्यूचर में नाउ द नेक्स्ट बुक इज विद पार्वती जी, जो मैसेजेस आ गए थे वो कुछ और करके, और उसके बाद we're going into this goddesses Kwani and Tala. So, but we are working together. So I am focusing on Eastern goddesses, Purapti, Jyotinya, and my collaborator is doing right now Western goddesses. So my next book will be with Parvati ji, Thousand Flowers of Joy, and then with
maybe one more book with Saraswati ji because she only got one point. उसके बाद Qualiman and Tara and so on. Hinduism, Buddhism. Wonderful. So I think the key message जो आप इस आपकी चैनलिंग प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं इज़ द पावर ऑफ सरेंडर, समर्पण भाव. इस पुस्तक में भी बहुत सारे जो शून्य स्थिति, जो इनफाइनाइट एम्प्टीनेस के बारे में जो देवी जी बताती हैं, ये समर्पण भाव का अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं. क्या आप समर्पण भाव के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से जो मैसेज था? Yes. तो समर्पण 2-3 तरह के हो सकते हैं, कम से कम 2 तरीके तो हो ही सकते हैं. एक समर्पण है आपने अपने बॉडी और सोल को समर्पण कर दिया अपने माइंड के लिए. दिमाग बोल रहा है ऐसे करो, ईगो बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, और बॉडी करते जाती है. ईगो बोलता है 16 घंटे काम करना है, बड़ा बनना है, you have to rise up in the career. Body surrenders, soul you don't are not even aware of. That's not the surrender we're talking about. That is also celebrated in the in the business world. That is a surrender. We're talking about a different type of surrender. This surrender is of the ego and the mind. Surrendering to the body and to the soul. तो एक किताब में एक वो दिया मेटाफर कि बॉडी, soul, higher self, they are the deeper levels of consciousness. Mind is a very small part of consciousness. We are so living in thinking mind or emotions thinking mind. So if you were to imagine, जैसे होते ना iceberg होता है, you've seen Titanic, it is the iceberg. So imagine a small iceberg, और उसके around there is a big lake. उसके अराउंड देयर आर ओशंस, समुद्र है लेक्स के चारों तरफ, और उसके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स. तो आपका जो माइंड थिंकिंग इमोटिंग ऑल ऑफ दैट इज ओनली द आइसबर्ग, जो फ्रोजन आइसबर्ग. जो लेक्स है उसके चारों तरफ दैट इज द बॉडी. जो ओशंस है उसके चारों तरफ दैट इज योर सोल. सोल इज इन्फिनिट, और oceans are like infinite. And then उसके चारों तरफ जो पूरा ब्रह्मांड है, that's your higher self. Higher self is everything and nothing. It includes everything and nothing. तो इतनी बड़ी consciousness में अपन रहते हैं. What are we aware of? Only the iceberg. An iceberg is frozen. Why is it frozen? Because we think same thoughts. वही 5 लोगों से हमें प्यार मिलता है, वही 5 लोगों की अपन निंदा करते हैं. इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और वो वही थॉट्स चलते रहते हैं. कईयों के सालों सालों तक वही थॉट्स चलते रहते हैं. सो यू थिंक समथिंग न्यू इज हैपनिंग, पर एवरी डे वही स्टोरी होती है. इसने मेरे साथ ऐसे किया, मगर इसने मेरे साथ 10 बार पहले भी ऐसे किया था, राइट? एंड वी स्टिल कंप्लेन, राइट? बिकॉज़ यू फ्रोजन इनटू दैट. So that is the freezing of the mind, and mind will keep you in a very small existence. जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, बस उसी में चल रहे हो, दुनिया मालूम नहीं. So it might seem, ऐसे लगेगा कि how can body be a deeper level of consciousness, but it is. अपना जो thoughts, जो विचार, जो emotion है, वो surrender करते हैं body को. जब भी आप क्रियाएं करते हैं ना, योगा करते हैं या कोई ब्रीदिंग क्रिया करेंगे या कोई बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ स्विंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो द माइंड इज वर्किंग लेस, इट्स डिसॉल्विंग. स्पेशली ये जो ब्रेथ मेथड्स इन योगा एंड ऑल दैट, आप 1 घंटा योगा करिए, तो जैसे आप आए थे स्ट्रेसफुल आए थे और 1 घंटे बाद योगा करेंगे तो स्ट्रेस चला गया. कहाँ चला गया? It was dissolved by the body consciousness. और body consciousness है next, वो dissolve होएगी oceans में, that is the soul. Soul, how do we understand soul? Soul क्या है? Soul is defined by soul feelings. Soul feelings आत्म भावना. अभी आप किताब में देखेंगे. So if I want to read some of them, joy, love, freedom, peace, wisdom, creativity, bliss, ecstasy, laughter, happiness, abundance, compassion, celebration, gratitude, equanimity, harmony, silence, grace, beauty, reverence, passion, devotion, faith, surrender, mystery,
I'm only there less than half. Okay, all of these are soul feelings. That's the nature of the soul. It feels these feelings. What are these feelings? These feelings will always dissolve the ego. Just like what is one feeling? Forgiveness. Now, true forgiveness always dissolves the ego. The reason we don't forgive is because through pain we're holding on to that energy. और वो ईगो माफ करने नहीं देता, मैं क्यों माफी मांगू या मैं क्यों माफ करूं किसी को, किसी से आपको खुंदस है तो नहीं करना माफ, ईगो कहता है। आप फॉरगिव करिए, उससे आप भी लाइट हो जाएंगे, वो भी लाइट हो जाएगा। They forgive or not is not your task, but we have to continuously forgive ourselves, अपने आप को माफ करना और दूसरे को माफ करना। वो अगर अपन करते रहेंगे तो we will grow into the soul field. कोई भी ले लो आप, जैसे another one is honesty. Small lies sometimes we utter to protect our ego, कि लोग मुझे ठीक समझे, कि मेरा अप्रूवल हो, करते रहते हैं ना छोटे छोटे लाइफ। दे डोंट मैटर, बट वी मेक अप सम लिटिल स्टोरीज। कभी लेट हो गए तो कुछ ऐसा एक्सक्यूज बना दिया कि थोड़ा ज्यादा ठीक लगे, मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं कभी सो रहा था और देर से उठा इसलिए। सो ट्राई टू बी मोर ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि इतना ऑनेस्ट कि किसी को दुख पहुंचे, कभी कभी कुछ चीजें नहीं बतानी होती है, बट if we are more honest, yeah, it's a soul feeling, it will dissolve the ego. Love, joy, freedom, peace, all of these soul feelings, ये आत्म भावना है। तो इन सब से अपना अहम कम होगा। जब अहम कम होगा तो अपनी माइंड की सफरिंग कम हो जाएगी और बॉडी अवेयरनेस, सोल अवेयरनेस बढ़ेगी। You'll be healthier, you'll be happier. So that's the soul dimension. So अब जो अपना मेटाफर था उसमें माइंड was the iceberg, legs were the body is all the yoga, breathing, all of that, eating healthy, avocados, everything, right? जो भी है उसमें। और उसके बाद soul with soul feelings and dissolving the ego and mind. Then higher self. Higher self is your divine nature, the ultimate who you are, which is a divine being. हम सारे divine being बस pretend कर रहे हैं कि हम we are a small entity, we're an iceberg. It's a universe pretending to be an iceberg. तो अब टाइम आ गया ऊपर उठने का, so the iceberg should melt, ताकि हम lakes बने, फिर oceans बने, फिर ब्रह्मांड बन जाए, and that time is come. And that is the message of the goddesses. वो ये बोल रहे हैं कि now get out of your suffering mind. सारा mind करता है, जो 4 levels of consciousness में है, उसमें ज्यादातर suffering, almost all suffering, just a little pain comes from the body sometimes, but not suffering. Mind is the one that creates सारी suffering mind से। तो वही meditation का इसीलिए होता है कि mind थोड़ा शांत हो। And this wisdom has been there forever, ऐसा कुछ नया नहीं है, मगर उसी को जो goddesses ने इस time, देवियों ने इस time जिस तरह से इस wisdom को लाई, that can totally change the earth because of the central importance of the divine feeling. And we can come back to that and keep coming back to that. And that is you said soul feelings. Yeah. And once we move from ego-based feelings to Atma Bhavna, that's when we truly begin to experience our soul. Yeah. How does one know whether what they are experiencing is not from a state of mind, but actually from a state of purity, of joy? Good question. And we'll never know 100%, but even if we know 99% is good, right? So what is the emotion and what is the soul feeling? I say, I love something. I love these pants. Is that a soul feeling? Depends करता है कितनी गहराई से you are feeling the atoms and the molecules and everything. And maybe it is a soul feeling, I don't know. ठीक है, हो सकती है. But generally it is probably not. Maybe it is my attachment, I love something, like things we love, they are more like emotions. They're tied to our ego. क्योंकि जैसे कोई ज्वेलरी पहने, कुछ पहने, उसमें लाइक करने की क्या बात है, वो इसलिए लाइक करते हैं ना, इससे अपना थोड़ा स्टेटस बढ़ता है, या थोड़ा अपन अच्छे दिखते हैं, our ego feels better,
तो इसलिए करते हैं. So that is more an emotion, that kind of love. I love my jewelry, I love this, I love my shoes. I love only my son. Even your child, my son is the best. He always comes first in his class, and we are proudly declaring to the world. So that is more of an emotion. Soul feeling will be ऐसा प्यार उमड़ेगा सब बच्चों के लिए. एक ही बच्चा है, सबके लिए प्यार उमड़ना चाहिए. That's a soul. Beyond just your personal attachment. अभी आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और इंडिया इज डाउन एंड पाकिस्तान इज विनिंग एंड लेट्स से यू आर फ्रॉम इंडिया, तो क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाते हैं. क्यों डाउन हो जाते हैं? और वो पाकिस्तानियों की भी, they also have families, they also have a population, they're also celebrating. Can you feel their joy? And same thing for them also, when they are watching our match, in India, they should also feel joy. So we created a society where in sports, where हर चीज में थोड़ा सा ईगो आ जाता है. जो भी चीज को हम लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, वो ईगो बेस्ड है. मेरा देश, मेरा ये, मेरी बॉडी, मेरा बच्चा, everything like that. To make it a soul feeling, it has to dissolve. Dissolve in the infiniteness. सबके लिए प्यार, सबके लिए खुशी, जानवर, पेड़ पौधे, सबके लिए. So that is the transition. जो ego हमेशा dissolve होगा और awareness बढ़ेगी अपनी body को. अब body is the missing link. सब कई religions में आत्मा की बात करते हैं. सब लोग बात करते हैं कि love thy neighbor, प्यार करो सबसे, ठीक है, और be enjoy. There are laughing, meditations, where you just keep laughing. All of these are so things. इसकी सब बात करते हैं. But body is also there, but in some religions they ignore the body, or they will torture the body. एक महीने का फास्ट करो and all that. So देवियाँ कहती है कि going, this is even Buddha used to say this, go the middle way. Don't torture the body. Don't get so abusive with the body, because body is a great vehicle. बॉडी से आप करेंगे ना, योगा करेंगे, कुछ ब्रीदिंग क्रिया करेंगे, जस्ट बिकम अवेयर. अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सारी आवाजें सुनिए, अपना बॉडी वेट महसूस करिए, एंड लुक एट एवरीथिंग एज इफ यू आर लुकिंग एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम. जस्ट कंप्लीट बिकम सेंसेस. उसमें दिमाग में डिसॉल्व विद द बॉडी. But most of the time आधा दिमाग चल रहा होता है, तो जो अपन देख रहे होते हैं, we're not really watching. Yeah. I'm looking at you, the light is going into my retina, and as soon as the first, few photons hit, I've already figured out who you are, क्योंकि मैंने क्या किया, my thought process got triggered, और वो जो past conditioning है कि आपका जो नजरिया, आप जिस तरह से बैठे हैं, आप जो कपड़े पहने हैं, आपका जो चेहरा, उसको देखकर मेरा दिमाग फायर करने लगता है और मेरे थॉट्स शुरू हो जाते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस. नाउ आई एम नो लॉन्गर लुकिंग एट यू, ऑलरेडी जज्ड यू, एंड वी आर जजिंग पीपल ऑल द टाइम. उनको देखते ही कौन की क्या स्टेटस है, कौन कैसा है, उनकी रुतबे से, कपड़ों से, एक्सेंट से स्टार्ट जजिंग. As soon as we judge, we are not meeting reality. We're not meeting that divine soul that is present right there. We're just missing that person because we are seeing our own thoughts. How can we connect to that person if as soon as we see them, we judge them? So our senses are polluted by our thoughts. We're not seeing. We are seeing what we want to see. इसमें cognitive neuroscience में भी एक theory होती है, pattern completion. According to that theory, most of what our senses sense, what we see, what we hear, majority of that, more than 50% of that, is our self-made up reality. खाली 30-40% या even 20% आ रहा होता है बाहर से. उसके बाद अपना दिमाग फायर करता है और other neurons, and then we're just not thinking pattern, और फिर जज कर रहे होते हैं खाली कि यार ऐसा है, ये जगह ऐसी है. कहीं पर वेकेशन पे भी जाते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन लेते हैं इन आवर रिसोर्ट और व्हाटएवर, वी स्टार्ट जजिंग, ये तो जगह ठीक ही नहीं है, और इट इज नॉट एज गुड एज वी थॉट.
Because as soon as you want to a new place, you've never been there. कम से कम be open. Don't be in thinking right now. महसूस तो करो कि जगह क्या है. Don't start judging. Don't start judging. And as we judge, we are no longer present to the reality. So, body can be a very big vehicle in the sense, be fully alive to the senses. Become intensely like, small children. 2 साल का बच्चा होता है. Look in their eyes when they look at you. क्या intensity से देखते हैं. Like they are looking at you for the first time. ऐसी intensity होती है. These are the simple young children. इसीलिए they learn everything quickly. भाषा जल्दी सीख जाते हैं. Because they are the only ones who are listening. हम तक थोड़ी सुन रहे होते हैं. हम तो आधा सुन रहे होते हैं. जैसे कोई एक्सेंट है, आधा दिमाग चल रहा होता है. तो जो छोटे बच्चे थे उनको सारा सब कुछ सुनाई देता है. तो अमेरिका में जो बच्चा पैदा हो उसका एक्सेंट अमेरिकन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो 100% सुन रहा है क्या बोल रहे हैं. So his tongue starts moving in the same way to speak that language. Because he's fully hearing. We're not fully hearing. We're not fully seeing. We're not fully feeling our bodies. We're ignoring this great divine instrument which can be used to grow. So be fully alive to the senses. कहीं बैठे हो तो महसूस करो कहाँ बैठे हो. Shift your weight a little bit. See, am I sitting correctly? Feel your weight. Get grounded. These are small things we can do anywhere. In a meeting also we can do. Right? But we don't do that because society ने उनको important नहीं माना. Society ने खाली important माना है और achievement जो दिमाग कर सकता है. And that's why that's a very masculine world we created. खाली mind को importance दी है, body को भूल गए हैं, आत्मा को भूल गए हैं, higher self को भूल गए हैं. Wow. So everything starts from being open. Yes. That's the first step. When we go beyond conditions to unconditional states, and from ego state to ego free states.